Everyone, in the previous video, we have seen the list data structure in detail. In this video, we will be talking about the tuple data structure in detail. So let me start. So how to basically use the tuple, मतलब हम किस तरीके से टपल को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका देखा या लिस्ट के बारे में देखा कि लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है ना, हेटेरोजीनियस डेटा को होल्ड करके रखता है। बट लिस्ट के साथ क्या था कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो यदि हम लिस्ट की प्रॉपर्टीज को साथ में रखते हुए हम उसमें इम्यूटेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि जब भी हम उसमें कोई डेटा अपेंड करना चाहें, ऐड करना चाहें, इट शुड नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो वो उस सेम ऑब्जेक्ट पर हम चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस नेचर को हमें पता है, हम इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। तो टपल इज ऑल अबाउट द लिस्ट कॉन्सेप्ट्स बट विद द इम्यूटेबल नेचर, है ना। सो लेट वी सी हाउ टू declare the tuple here. So for tuple you have to create like this. जब मैं इसके टाइप को प्रिंट करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ, तो यू कैन सी वी आर हैविंग द क्लास tuple. एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल असाइनमेंट्स करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, तो जो बाय डिफॉल्ट पाइथन वर्चुअल मशीन है इस वेरिएबल में इस मल्टीपल असाइनमेंट को टपल्स के फॉर्म में लेती है। व्हाट डज इट मीन? यदि मैं फिर से इस टी के लिए इस टाइप को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, so you can see the output is a class tuple only. So either you can give values to this tuple like this, और इस तरीके से भी आप टपल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, यदि मैं टपल के लिए कोई वैल्यू को इस तरीके से लिखता हूँ, है ना, एंड व्हेन आई प्रिंट द टाइप ऑफ टी, run this code, so can you see it's an integer, it's not a tuple. But मैंने बोला आपसे कि क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जब भी मैं वैल्यूज को डालता हूँ तो वो टपल बनाती है। yes, this statement is correct, but it's basically type casting type of activity, it's not the tuple creation. तो यदि पाइथन वर्चुअल मशीन को मुझे बताना है कि ये सिंगल एलिमेंट टपल है तो मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा, इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा। व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी द चेंजेस here, the class integer has been changed to the tuple. सिमिलरली जब मैंने इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं, तो यदि मैं 10 कॉमा करता हूँ, व्हेन आई रन दिस कोड हियर यू आर गेटिंग नो एरर, व्हेन यू आर हैविंग दिस टाइप अगेन द tuple. So this is what the way by which you can define the tuple in the Python. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम टपल के बारे में बात करते हैं तो टपल इज काइंड ऑफ इम्यूटेबल लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इसका मतलब टपल जो है हमें द टपल सपोर्ट what it support the indexing। जिस तरीके से हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज लिस्ट के साथ किया है उसी तरीके से हम टपल के साथ भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, we are having t is equal to 10 20 30, and we want to print the value that is t of 1. So when I run this code, can you see the output is the 20? Similarly, I want to print the value, the tuple value from 2 1 should be print, not print. That's fine. So when I run this code, you can see the output is 10 only, है ना। तो because this is the n minus 1. Okay, and now let me check some mathematical operator with tuple, है ना। So mathematical operators with tuple.
इस तरीके से क्या हम टपल में कॉन्केटनेशन परफॉर्म कर सकते हैं? सो लेट मी चेक इट। सपोज मेरे पास फर्स्ट टपल जो है दैट इज 1 2 and 3, and we are having second tuple that is t2 is equal to 4 5 and 6. When I do the t1 plus t2, t1 plus t2, when I print t3, let's see the output is 1 2 3 4 5 6. So what I'm doing, I'm using the plus operator to merge two tuples. Then about the multiplication, taking this tuple here t1, just I'm printing print 3. So when I run this code, you can see the 1 2 3 values are repeated 3 times. So similarly with the list, the tuple is working. Now there are a set of the functions which is used with the tuple like a list. What are these functions? So we will be talking about the len function. So what is this? If I am printing the len of t, so you can see the output is t here because we have taken the t tuple here. It's already t variable. So like this again. So you can see the output is 3. Similarly, if you want to count something inside the tuple, like मेरे पास this is what the t1.3 let this is what the code for the t2, that is t1.3, and over this t2 let I do the count of 1. यदि मैं 1 के काउंट को देखता हूँ तो इस t2 में जो वैल्यू असाइन हुई है, t2 में कितना है 1 का काउंट, दैट इज a minute. Okay, so when I run this code, the t2 is this one, and when I do the t2 dot count, तो काउंट हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि गिवन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर रहा है. दिस इज रिटर्निंग द फ्रीक्वेंसी. So when I do the t2 dot count, you can see the output is 3 because it was taking something different t2 previously, क्योंकि मैंने previous cell जो थी उसको execute नहीं करा था. So now the value of 1 is equal to 3. Similarly, like list, if I want to find out the index of some element, like t2 dot index of 1. When I run this code, can you see that it will be returning the initial index of t2. Similarly, we can have this short function. So if I call, suppose for this array, let I take one more tuple here. Sorry, not array. 10, 50, 12, and 20. Okay. Then when I apply the print sorted, with this code, you can see that everything is in the sorted order. So this is what the sorted function with the tuple. Now, very important thing is here. Just like a list unpacking, we are having the tuple unpacking. What does it mean? Suppose मैं ये tuple लेता हूँ, that is tuple t1 is equal to 1 2 3. So when I utilize this t1 in 3 values, like what I want to do, I'm taking just a, b, and a, b, c is equal to t1. Print this a, b, c and run this code. Can you see the output is 1 2 3? So from this tuple, we are getting the values in an individual variable. Fine. So this concept is known as the tuple unpacking. So see, like list comprehension,
we need to see like a list comprehension. Is there any possibility to have the tuple comprehension? Like in a list, suppose we are having one list, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपका मैं एक वेरिएबल लेता हूँ I into I, and for every I range of 10 suppose, and I want to create this list. So when I print list L, as well as when I print the type of this list, this code, so can you see the output is list? But let I apply the similar logic with the tuple. When I run this code, can you see this is what the generator object, है ना? That we will discuss later. So it need to be very clearly taken care. We should take care of this. There is no word like the tuple comprehension. So whenever you're trying to have a values in a form of the comprehension inside the tuple, you will be generating the generator object. But in case of the list, you will have the list as the output after the list comprehension. Just like a tuple, just like a list, we can access the tuple. Like let me take a simple program here. Suppose this tuple is containing the 1 2 3 value, and we want to print the sum of all these values. So what I can say, I will be taking one initial sum variable here, and for every element in tuple, like other like the list, I can access individual data of this tuple. What I need to do, just sum plus equal to I here, and then print sum. Do this, can you see the output is 6? So in a similar way of the list, we can access the tuple, we can have indexing, we can have slicing, as well as we are having the number of functions. But one biggest difference is there, tuple is the immutable in nature, and when you try to perform a comprehension with the tuple, you will be having a generator object instead of the tuple data. So this is all about the tuples, and for this video it's over from my side. Thank you.